Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Gaurang Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम लाएंगे आप तक आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की खबरें और साथ ही उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़ेंगी आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार। विशेषज्ञ हैं ये और विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगी। दीपशिखा जी, आप हमसे अगर कार्यक्रम में जुड़ गई हैं, नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत। नमस्कार विशाल जी। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है गौरा धवनलाल। Thank you, Vishal, and Deepshika, welcome to the program. A quick look at the headlines. India creates history, making soft landing of Chandrayaan-3 on south pole of the moon, paving the way for further space commerce. Prime Minister proposes cooperation with the BRICS Space Exploration Consortium, focusing on space research and weather monitoring. More than 520 lakh metric tons of rice estimated to be procured during the forthcoming Kharif marketing season 2023-24. And key domestic stocks witnessed modest gains amid positive global cues. Sensex closes above 65,400 level. Nifty settles above 19,450 points. भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 को उतारकर रचा इतिहास, भविष्य के अंतरिक्ष व्यवसाय का मार्ग प्रशस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स अंतरिक्ष अन्वेषण संघ के साथ सहयोग का प्रस्ताव दिया। अंतरिक्ष अनुसंधान और मौसम निगरानी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आगामी खरीफ विपणन सत्र 2023-24 के दौरान 520 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद का अनुमान। और वैश्विक शेयर बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में हल्की बढ़त। सेंसेक्स 65,400 से ऊपर हुआ बंद। निफ्टी 19,450 के स्तर से ऊपर पहुंचा। India has created history by reaching the moon. The Indian Space Research Organisation ISRO accomplished the task of soft landing of its lander module Vikram on the lunar surface just a few moments ago. With this achievement, India has taken a giant leap in the area of space research by also becoming the first country to reach the south pole of the moon. Prime Minister Narendra Modi congratulated the Indian Space Research Organisation for successfully landing Chandrayaan-3 on the lunar surface of the moon this evening. The Prime Minister, who is in South Africa to attend the BRICS summit, also joined in virtually from Johannesburg to witness the historic moment. The Chandrayaan-3 mission was launched on the 14th of last month after successfully completing several stages during its 43-day journey. The Chandrayaan today landed on the Earth's only satellite, the Moon. This success will boost Indian further space commerce and economy. Prime Minister Narendra Modi today hailed ISRO for the remarkable success of the Chandrayaan-3 lunar mission. Addressing the nation through video conferencing from South Africa, Mr. Modi said, "This is a historic day for India's space sector and sounds the bugle for a developed India." The Prime Minister said India has taken the pledge on Earth and fulfilled it on the moon. The Prime Minister said it is a moment for the developed India and a new energy. He said, "When we see such historic moments, it makes us very proud." Mr. Modi remarked that this is the dawn of a new India. He said success belongs to all humanity and expressed confidence that the global south has the capability to achieve such a feat. Well, Deepshika, a proud moment for every Indian and of course for the special team that made this possible. In terms of, it's a moment of pride for all Indians. Absolutely. So in terms of how we are seeing, our space economy grow, what are the ramifications, what could be the great possibilities that open up for us?
So this is a huge testament for, India's own space program and kind of feat that, we've achieved by, safe landing. And at a place where no one had gone before, the South Pole of Moon. So it definitely is a huge testimony. And if you remember, Gaurang, India unveiled a space policy, and the government in the space policy has laid out that, private enterprises would be allowed to launch satellites and rockets into the space. So directionally, it's a huge boost for what India is trying to do. It is trying to rope in private sector. It is looking at space as another sector which could be, which has huge potential and which can sort of bring in huge investments for the country and create a lot of jobs, different kinds of research, and the possibilities are immense. And government's working towards it by putting in place a policy framework, and this mission sort of gives it a huge boost. So even in terms of when we look at the achievement in terms of financial terms, I think the cost that we have borne for this is very, very nominal compared to world standards, and that by itself is a huge achievement. Definitely. I mean, and if you remember, Gaurav, we have been specializing, we've been sort of launching satellites for a lot of other countries. And our feat has been that we can do it at a low cost. And with this mission, we have shown to the world that we can do even take a mission on the moon at such a low cost. Look at the scale of it. We've just seen a mission by another country which could not succeed, unfortunately. But the costs there were huge. And if you look at the costs incurred by other countries in similar area, there is a huge difference. So what we are looking at is low cost and the achievement in this regard that we will finish the task at a very low cost. So definitely puts it in a very different level. In terms of a regional perspective, we talk a lot about South-South cooperation, and the Prime Minister has expressed confidence that the Global South has the capability to achieve such a feat. You see a lot of regional cooperation in this area, and India being a leader coming in? Definitely. India and Prime Minister Modi has been emphasizing that, India represents the Global South. So definitely we will see greater cooperation satellite communications, space activities. India is offering, immense possibilities for the Global South. In fact, at the G20, one of the major focus for India during its presidency has been how to put concerns and challenges of the Global South to the world, and how to sort of bring about more cooperation. What more can be done for the Global South? India has proposed, digital public infrastructure, how it can help the Global South. So definitely with this new feat, this is also a possibility which we are offering to the world, and especially whatever support the Global South would require, India would be willing to provide in this area. So in terms of, how we're seeing space opening up, this space, no pun intended actually, for the private sector within the country also, do you think that, and it is, it is classified, a lot of it was classified, it's a transfer of technology. Do you think we have enough checks and balances in place to ensure that, because finally it was a government project and it has security ramifications? Definitely. And if you actually look at the policy, it is a very comprehensive policy which the government announced. And it has definitely all the checks and balances. It ticks all the boxes per se. The whole idea is to, bring about Atmanirbharta in the space sector. That would be the focus. And we're looking at different kind of developments within space sector. So satellites for, weather, satellites for
different, communication, also promoting entrepreneurship in space sector. This is one area which has phenomenal, potential, and which can really generate jobs. And India has the wherewithal. This mission, this successful mission it has opened a window to the world. It is not just in the government sector, but also the private sector, with the support of the government entities, can actually scale really unforeseen levels in the space sector. Right, so a great moment of euphoria for all of us, and now to see our sustainability and can we go from strength to strength in the space sector. We now move on to our next story. जी गौरा, अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए संबद्ध देशों को भी तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जोहानिसबर्ग में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन को प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने लंबी और महत्वपूर्ण यात्रा तय की है और इस यात्रा में इस संगठन ने कई उपलब्धियां हासिल की। श्री मोदी ने सभी ब्रिक्स देशों से अफ्रीकी संगठन को G20 में सम्मिलित करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के एजेंडे को नई दिशा देने के लिए भारत ने रेलवे अनुसंधान नेटवर्क, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के बीच सहयोग, ऑनलाइन ब्रिक्स डेटाबेस और स्टार्टअप कंपनियों के बारे में सुझाव दिए हैं। उन्होंने ब्रिक्स के विस्तार के लिए भारत के सहयोग की भी घोषणा की। श्री मोदी ने ब्रिक्स अंतरिक्ष अन्वेषण संघ के साथ सहयोग का प्रस्ताव दिया, जिसमें अंतरिक्ष अनुसंधान और मौसम निगरानी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दीपशिखा जी, प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स सम्मेलन में ब्रिक्स अंतरिक्ष अन्वेषण संघ के साथ सहयोग का प्रस्ताव दिया है और अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में इसमें ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अंतरिक्ष अनुसंधान और मौसम निगरानी पर कितना महत्वपूर्ण मानती हैं आप इसको, जो भारत ने जो सफलता हासिल की है, महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, उसे देखते हुए? विशाल जी, जो आज की उपलब्धि है और उसको हम प्रधानमंत्री के हिसाब से प्रधानमंत्री इसे बांटना चाह रहे हैं। जो भारत ने अचीव कर लिया है इस मून मिशन से, उसकी टेक्नोलॉजी वो बांटना चाहते हैं ब्रिक्स, ग्लोबल साउथ सबके साथ। और इसमें कोऑपरेशन की, सहयोग की बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि एक क्लाइमेट चेंज जो एक बड़े चैलेंज, बहुत बड़ी चुनौती के रूप में विश्व के सामने खड़ा हो रहा है। तो जितना इंफॉर्मेशन एक्सचेंज आपस में होगा, उसको कितना और बढ़ाया जा सकता है, कितना उसे और मजबूत किया जा सकता है, ये हर देश के सामने चुनौती है। और इस भारत ने जो चंद्रयान के तहत एक उपलब्धि हासिल की है, इसको आगे किस हद तक और बढ़ाया जा सकता है, इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, ब्रिक्स आपस में कितना सहयोग कर सकते हैं। हमने देखा ब्रिक्स समूह के ही एक दूसरे जो चंद्र मिशन था उनका, वो सफल नहीं हो पाया इन्हीं कारणों के कारण। तो भारत का जो एक्सपीरियंस है, भारत उसे बांट सकता है और ब्रिक्स समूह जो है आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हुए इसमें आगे और बढ़ सकते हैं। जी दीपशिखा जी, ब्रिक्स की जो बिजनेस फोरम में जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, वो ये कहा उन्होंने कि डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत अव्वल है और बहुत जल्द ही भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा और हम वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन बनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिक्स देशों को इकोनॉमिक फ्रंट पर सहयोग करना होगा। जब ये इकोनॉमिक फ्रंट पर सहयोग की बात आती है तो प्रधानमंत्री क्या संदेश देना चाहते हैं ब्रिक्स देशों को? देखिए, ब्रिक्स देशों में प्रधानमंत्री बहुत क्लियरली ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ जिस तरह से डिजिटाइजेशन हुआ है, जिसका आगे बढ़ाया है, उसको हम G20 में भी आगे और बढ़ाना चाहते हैं। और ये ग्लोबल साउथ को भी भारत की तरफ से इसको काफी पुश किया जा रहा है G20 में। उसके अलावा जो ब्रिक्स का समूह है, हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिक्स जो है इस समय बहुत हावी हो गई है अर्थव्यवस्था पर, और विश्व की अर्थव्यवस्था पे जियोपॉलिटिक्स, जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, उनकी वजह से काफी असर पड़ा है। तो ब्रिक्स का अगर हम समूह देखते हैं तो उसमें ब्राजील है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है, चाइना है। तो ये जो समूह है, इसको आपस में सहयोग और आपस में किस तरह से आप
आर्थिक मामलों में ही कितना आगे बढ़ सकते हैं और जियोपॉलिटिक्स समस्याओं को न बीच में आने देंगे। तो प्रधानमंत्री का मुझे लगता है इस तरफ इशारा है कि अर्थव्यवस्था को, ब्रिक्स की अर्थव्यवस्था को किस तरह से और मजबूत किया जा सकता है और एक दूसरे को हम कितना सहयोग दे सकते हैं इस मामले में। Right. So now the next story, this is about rice procurement, and more than 521 lakh metric tons of rice estimated to be procured during the forthcoming Kharif marketing season 2023-24. And according to the Consumer Affairs, Food and Public Distribution Ministry, the leading state in terms of estimated procurement of rice is Punjab. In a statement, the ministry said that more than 33 lakh metric tons of millets, that's Sri Anna, is estimated to be also procured by the state during the coming Kharif marketing season. Just to bring a context to the next question, Deepshika, the government e-marketplace has surpassed 1 lakh crore rupees in gross market value, which is a milestone in record time and the largest public procurement portal globally. We've done this. And recently the finance minister said, inflation may stay elevated in the coming months. We've had very, very heavy rains in some areas and unexpectedly low rainfall in some areas. So it's been overall, the averages are fine, but the scatter of the distribution of rainfall has been a little, skewed for good prosperity in terms of food grains. Now, keeping all this in mind, do you think that this is somewhere a preparation? Because we've done some work on rice, we've put in some curbs on export of rice, on onions. So the government is preparing for the future? Definitely, Gaurang, the feeling is, and we've seen with the latest inflation data, how the seasonal spike in vegetable prices sort of pushed up the food inflation. And food inflation, as we know, is a huge component in the retail inflation. So government is definitely taking preemptive measures, and we heard Prime Minister from the Red Fort on Independence Day, and he said it so emphatically that government will go all out to protect the citizens from rising inflation. All measures would be taken, and policy interventions, some have already been taken, and the government will, going forward, take more policy interventions to ensure that the consumers are protected, they do not face the heat from rising prices. So preemptive measures have been taken in case of onion. We've already taken measures in case of rice, because rice is also globally, there is a concern that the prices may spike. And in India also, because of, monsoon, erratic monsoon, there have been concerns about, because the sowing was late, so there could be some issues with productivity. So we are taking preemptive policy interventions to ensure, Indian consumers do not suffer from any sharp spikes. जी, रुक करते हैं शेयर बाजार का। वैश्विक शेयर बाजारों से प्राप्त सकारात्मक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में आज हल्की बढ़त दर्ज हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 65,400, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19,450 के स्तर से ऊपर बंद हुए। सेंसेक्स 213 अंक की वृद्धि से 65,433 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 48 अंक बढ़कर 19,444 पर पहुंच गया। व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.42% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.6% की बढ़त के साथ बंद हुए। The key domestic share indices today logged modest gains. The BSE Sensex closed above the 65,400 level, while the NSE Nifty ended above 19,450 points. Both indices added amid positive global cues. The Sensex finished 213 points up at 65,433, while the Nifty settled 48 points up at 19,444. In the broader market at the BSE, the mid-cap index added 0.42% and the small-cap index rose 0.6%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 16 firms appreciated while 14 declined. State Bank of India and ICICI Bank both surged 1.5% each. Larsen and Toubro climbed 1.4%. On the other hand, Jio Financial Services slumped 5%. Sun Pharma and Bharti Airtel both slipped
1.2% each. In sectoral indices at the BSE, 13 sectors gained while 7 logged losses. BankX and capital goods indices advanced 1.2% each. Industrial sector rose 1.1%. On the other side, power sector declined 1.1%, utilities index fell 1%, and the services sector slipped 0.6%. The overall market breadth was positive as shares of 2,080 companies appreciated and 1,541 companies declined. A total of 162 shares remained unchanged. We welcome online our market expert, Avinash Gorakshakarji. Avinash, welcome to the program. Yeah, good evening. Okay, thank you for joining us. So, as every Indian is congratulating everyone, we'd like to we congratulate you, and as you congratulate the whole country. India has made a great achievement. We've really landed Chandrayaan-3 soft landing on the moon. So, more than congratulations, what is this going to do to the market? I think. See, this has got to not got to do anything directly with the market, but I think space has always been a great opportunity, for both the public sector and the private sector companies. So therefore, you could see a lot of interest in companies, which are supplying to ISRO, especially in terms of equipment, in terms of services. So obviously, in terms of some stocks, like Midani or typically, something like Bharat Electronics, which are large vendors to, organizations like ISRO, you could possibly see a spike, in tomorrow's trading session. But I think net, it's a big achievement for India, a proud moment for all Indians. So I think, the market should obviously feel a little sentimentally boosted by this development tomorrow. जी अविनाश जी, बाजार की बात करें तो आज देख रहे हैं हम कि बैंकिंग शेयरों में तेज़ी रही है, इसलिए बाजार में भी थोड़ी बहुत बढ़त दर्ज हुई है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये देख रहे हैं हम कि 19,300 19,500 के दायरे में ही कारोबार कर रहा है। 19,500 का अगर ये लेवल तोड़ करके ऊपर जाता है निफ्टी, तो क्या हम एक रैली की उम्मीद कर सकते हैं मार्केट में? देखिए, बहुत समय के बाद बाजार में आज एक थोड़ा बहुत पॉजिटिव रुझान आ गया है। मैं एफआई और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के आंकड़े देख रहा था, तो नंबर छोटे हैं लेकिन आज दोनों ने मार्केट में खरीदारी की। तो ये बात एक अच्छी सिग्नल देती है कि मार्केट में लोअर लेवल्स पे भी बाइंग आ रही है। होपफुली अगर बैंकिंग सेक्टर में तेजी बरकरार रहती है तो हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में थोड़ा सा और मार्केट्स में अपसाइड आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। So people are holding, and of course the index is limited companies and is showing a rise and a fall. But there are many people holding other shares which are also moving, maybe not always with the index, but by and large. So what you suggest that people actually hold on because it is, I think, gaining strength, it's consolidating, and people should wait a little longer before they suddenly really, want to book profits? Yeah, I think you must understand one thing, that now the Q1 earnings season is complete. Broadly, almost 80 to 85% of the companies have given good numbers, given very good positive commentary. So now the market will look at a lot of global and macro kind of, factors, specifically considering the fact that now going ahead in the next 1 or 2 months, we will be looking at, state elections in Rajasthan, Madhya Pradesh. Most importantly, the progress of the monsoon is now going to be very important, because that would be a very, important factor in determining how inflation pans out. So I think investors should hold on. I think the markets are very well poised. I think there is some consolidation going on. So I think the markets may not rise significantly. At the same time, they may not, significantly see any major panic sell-off. जी, एफआईआईज़ की बात करें तो आपको लगता है कि एफआईआईज़ कुछ इंटरेस्ट, कुछ रुचि दिखाएंगे खरीदारी में, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स ऊपर चल रहा है, 103.93 पर था, और यूएस बॉन्ड यील्ड भी ऊंची बनी हुई है, ऐसे में क्या एफआईआईज़ का रुख क्या रहने वाला है? देखिए, एफआईआईज़ का रुख तो इंडिया की तरफ पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि बीच में थोड़ा बहुत बिकवाली का प्रेशर आता रहेगा, जैसे डॉलर इंडेक्स का मोमेंट के हिसाब से वो लोग पोजीशंस ऐड या माइनस करते हैं। लेकिन देखिए, अगर हम मैक्रो सिचुएशन देखें तो आज पूरे एशियन पैक में इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहां पे उनको ग्रोथ बहुत बढ़िया तरीके से मिल रहा है। इनफैक्ट हम तो अभी चाइना से भी अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि फ्लोज कंटिन्यूसली आएंगे, थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन जो लार्ज कैप कंपनियां हैं वहां पे निवेश के मौके अच्छे बने हैं। वहां पे आपको अच्छी तरह से फ्लोज निफ्टी, सेंसेक्स की कंपनीज में आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है छोटी मझोली जो कंपनियां है वहां पे थोड़ा बहुत बिकवाली का प्रेशर आपको देखने को मिले, बट रवैया एफआईआईज़ का मेरे ख्याल से बाय ऑन डिक्लाइन का ही रहेगा।
So, do you think this statement that, as the finance minister has said, that we're likely to see inflation carry on for some time? So, briefly, if we could understand from you, will that affect the market for FIIs also coming in? No, I don't think it will affect the markets, significantly. I think, a large part of the market believes that the rupee movement, the dollar index movement is largely responsible for the movement in FII flows. But my sense is that, FIIs are very well positioned and, happy on the progress of the economic reforms in the country. The trade deficit has also been managed pretty well. Inflation, although high, has got the potential to get scaled down once we get the final results of the monsoon post-September. Right. So I think this is not going to have any significant impact on FII flows, at least in the medium term. और अब विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए के प्रदर्शन पर नजर डालें तो $1 की तुलना में आज रुपया 82.69 के स्तर पर बंद हुआ। रुक करते हैं वैश्विक शेयर बाजारों का। एशियाई शेयर बाजारों में आज कारोबार मिला जुला रहा। जापान का निकेई और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक दोनों 0.5% बढ़त के साथ बंद हुए। हांगकांग का हैंगसेंग 0.3% लाभ में रहा। वहीं दूसरी तरफ चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.4% लुढ़क गया और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.4% के नुकसान में रहा। यूरोपीय शेयर बाजारों में अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान बढ़त दर्ज हुई। समाचार तैयार किए जाने तक फ्रांस का कैक 40 और जर्मनी का डेक्स दोनों में 0.5% की वृद्धि दर्ज हुई। लंदन की फुटसी 100 1% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। So before we say thank you to you, Avinashi, quickly, anything unexpected in the international market? Can you please repeat the question, please? Anything unexpected in the international market? We've just read out the figures. No, not really. I think we are not expecting any major kind of macro or any kind of headwinds, at least in the very short to medium term. But I think, yes, depending on the, I think the US debt situation in the US, I think any further commentary by Fed and obviously on interest rates, if that does not come about from the Fed committee, I think the market would remain in a very side zone. So nothing more, dramatic or volatile expected from the global markets. अविनाश गोरक्षकर, समय निकालने और हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. We now move on to a quick look at the US markets. The Dow and S&P 500 ended slightly lower yesterday as investors stayed worried, and the Dow Jones Industrial Average declined 0.5% and the S&P 500 index fell 0.3%. Nasdaq Composite Index added 0.1%. A quick look at the oil prices. In intraday trade, Brent crude was trading at $82.85 per barrel. West Texas Intermediate crude price was at $78.50 per barrel when reports last came in. और कीमती धातुओं की बात करें, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाला सोना आज अंतर्दिवसीय कारोबार में 34 रुपए की गिरावट से 58,540 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी 605 रुपए के उछाल से 72,590 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पर अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान सोना मजबूती के साथ $1,930.50 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी भी तेजी के साथ $24.10 प्रति औंस पर चल रही थी। So, Deepshika, question for you now in terms of our gold market. Briefly, gold as an investment, still good one? Well, if you look at the situation and particularly on the inflation, I guess it still holds some value for investors. We've seen the movement Right. which is northwards only, and it's moving in tandem with, it's sort of moving in tandem with the oil With the oil, prices right, that right. we've seen, Okay. right. Great. Thank you so much, Deepshika, for joining us on the program. And now, before we close, a reminder of the headlines. India creates history, making soft landing of Chandrayaan-3 on south pole of the moon, paving way for further space commerce. Prime Minister proposes cooperation with the BRICS Space Exploration Consortium, focusing on space research and weather monitoring. More than 520 lakh metric tons of rice estimated to be procured during the forthcoming Kharif marketing season 23-24. And key domestic stocks witnessed modest gains amid positive global cues. Sensex closes above 65,400 level, Nifty above 19,450 points. And that's it in this program. Namaskar. नमस्कार। Market Mantra.